Welcome to Ratish Techno Classes. Join Indian Army are inviting the applications from unmarried male and unmarried female, including wards of battle casualties of Indian Army personnel for grant of short service commission in the Indian Army. In NCC Special Entry Scheme 57th course April 2025. Eligibility criteria: the age limit should be between 19 to 25 years. That is, the candidate should born between 1st January 2025 and 1st January 2006. Candidates should note that the birth as recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will only be accepted. And the candidates who are going to appear in this exam should appear only one SSB interview, either SSC NT 121 course or NCC special. Educational qualification for NCC certificate holders: degree with 50% marks. For wards of battle casualties of Indian Army personnel, eligibility is required for those parents who killed in action or died of wound or injuries or wounded or injured or missing or pursued. And its qualification should also be degree with 50% marks. But there is no any requirement for NCC C certificate. But for NCC C certificate holders, NCC C certificate is required. So two category is given. Vacancies for NCC main 70 vacancies. Out of 70, 63 for general category and 7 for ward of battle casualties. While those for NCC women, 6 total vacancy is 6 and 5 out of 6, 5 for general category and 1 for ward of battles. Tenure of engagement: candidate will be commissioned for 10 years, total 14 years, initial period is 10 years and further 4 periods will be enhanced. And for 6 months the candidates will be in the probation period. Probation period is that period in which if you doing any mistake, misbehaving, your candidature will be cancelled, you will be this commission. Misconduct on account of medical unfitness, your termination will be commission. Training is for 49 weeks and all the cost will be taken by government expenses, and your training will be done at OTA, and after training you will be granted a postgraduate diploma in defense management and strategic studies. If यदि आप ट्रेनिंग से पर्सनल रीजन से बाहर चले जाते हैं तो आपको पर वीक का खर्च 16,260 रुपया देना पड़ेगा. प्रमोशन आप देख सकते हैं, रैंक के अनुसार प्रमोशन यहाँ पे दिया गया है. आफ्टर कंप्लीटिंग सम स्पेसिफाइड ईयर्स, सैलरी शुरुआत में जो सैलरी होगा आफ्टर कमीशन वो 56,000 होगा. जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा सैलरी बढ़ते जाएगा, जो आपको लास्ट तक COS आप बन सकते हैं. बहुत सारा ग्रांट भी दिया जाता है, जैसे क्वालिफिकेशन ग्रांट, अदर अलाउंस, para reserve allowance, technician allowance, technical allowance, hardship on the basis of risk, transport allowance. You can check. Also, children education allowance is given. Army group insurance fund. इसे अप्लाई करने के लिए हम
ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपनी सारे एलिजिबिलिटी को फॉर्म को फिल करके सेव कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एसएसबी के इंटरव्यू में अपीयर होना है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू 5 डेज का होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप में से जो भी कैंडिडेट पहली बार एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको एसी थर्ड क्लास का फ्री टिकट दिया जाएगा और डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नॉट चेंज ऑन एनी ग्राउंड। दिस इज फ्रॉम ज्वाइन इंडियन आर्मी। For applying, there must be Aadhaar number or class 10 certificate number. Applications has been started. Now you can fill the form as soon as possible. Thank you for watching. Like, share and subscribe.